Okay, let us see today the topic that is the Lagrange's interpolation formula for unequal interval. So here what we find out, we'll find out the missing terms for in between that given data. Suppose I am considering here the values of x are, it is a1, a2, a3 and a4. Okay, and corresponding values of y we denote as it is f of a1, f of a2, f of a3 and f of a4. I am supposing only these four values I am considering here, okay, for writing that formula, Lagrange's formula, and we suppose that this x that we have to find out, which is lies between a1 to a4, okay, therefore it is called as the interpolation formula. Okay, there are two types, it is interpolation and extrapolation. Extrapolation matlab it is less than a1 and greater than a4. If you find out the value, that will be the extrapolation. So this formula is valid for the interpolation, but sometimes अगर values nearer हैं a1 और a4 के, extrapolation में भी हम उसको use कर सकते हैं. Okay, so that varies, but this is especially we use for the interpolation. So suppose we are having these four values of x and four values of it is y. So we are having the four values, so we will derive here the 4-point Lagrange's interpolation formula. Now how to derive that? Suppose I consider that x lies between a1 to a4 and we have to find out the f of x. Actually with this things what we are doing, we are expressing this into the थर्ड डिग्री पोलिनोमियल. ओके, अगर हमारे पास चार वैल्यूज रहेंगी तो हमें क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा, और हमारे पास अगर तीन वैल्यूज है तो यू विल गेट दैट इज व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इतना आपको याद रखना है. ओके, वी आर जस्ट यूजिंग द लैग्रेंजेस फॉर्मूला, वी आर अप्रोक्सीमेटिंग दिस एफ ऑफ एक्स इनटू द nth डिग्री पोलिनोमियल. हमारे पास n+1 टर्म रहेंगे, बट द पोलिनोमियल दैट वी गेट एज व्हाट nth डिग्री. इज इट ओके? सो वन लेस. उसके बाद नाउ हाउ टू राइट डाउन द फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने बोला सो आई लीव द फर्स्ट वैल्यू a1, ओके, एंड देन यूजिंग दिस a2, a3, a4 आई राइट ऑन द डिनोमिनेटर. कैसे कर रखेंगे? x माइनस a2, यहाँ पे ये x हम यूज़ कर रहे हैं. ओके, यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा दैट वी यूज़ हियर, x माइनस a2, x माइनस a3, x माइनस a4. देन लेटर ऑन द a1 हमने जो छोड़ा था उसी में सब्ट्रैक्शन करेंगे अभी, a1 माइनस a2 दैट वी राइट हियर, a1 माइनस a3, a1 माइनस a4 विच इज़ रिटन हियर. And this is multiplied to the first value that is of a1, जो फंक्शन वैल्यू है it is f of a1 that we write here. ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म. यहाँ पे चार टर्म्स हैं तो फॉर्मूले में भी चार टर्म्स आएंगे. ओके, सो पहला टर्म हमने लिखा a1 को ड्रॉप करके, अब a2 को ड्रॉप करेंगे. नाउ वी राइट द डिनोमिनेटर एज, वहाँ पे x उसको यूज़ करना है, सो x माइनस a1, x माइनस a3, x माइनस a4 दैट इज रिटन हियर. देन इट इज a2 minus a1, a2 minus a3, a2 minus a4 that we write in the denominator multiplied to f of a2. f of a2 is here. ठीक है, आफ्टर दैट नाउ a3 को ड्रॉप कर रहे हैं हम यहाँ पे. अब फॉर्मूला कैसे बनेगा? x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a4. देन डिनोमिनेटर में क्या आएगा? इट इज a3 ड्रॉप किया है, a3 माइनस a1, a3 माइनस a2, a3 माइनस a4 विच इज रिटन हियर इनटू इट इज f of a3. उसके बाद लास्ट के लिए a4 ड्रॉप किया, वी हैव देन x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3, फिर a4 माइनस a1, a4 माइनस a2, a4 माइनस a3 इन द डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई टू दिस f of a4. ओके, इफ यू सॉल्व दिस कंप्लीट फोर टर्म्स वी विल गेट दैट इज थर्ड डिग्री पोलिनोमियल, अगर हम सिर्फ इन टर्म्स ऑफ x की बात कर रहे हैं तो. ओके, और अगर कुछ मिसिंग टर्म है हमारे पास, इन प्लेस ऑफ x वी आर हैविंग सम वैल्यूज, सो वी विल गेट दैट मिसिंग टर्म्स. वी विल फाइंड आउट दैट वैल्यू ऑफ अ मिसिंग टर्म्स, मतलब जो भी हमारा फंक्शन वैल्यू रहेगा दैट वी कैन गेट इजीली विद दिस फॉर्मूला. इज इट ओके? सो दिस इज द 4-point Lagrange's interpolation formula. Now let us see that this 3-point Lagrange's interpolation formula. In that case we will have three values of x, three values of y, which is written here a1, a2, a3, f of a1, f of a2, f of a3. Okay, now I am finding here f of x. Okay, here we will get the polynomial of degree 2. यहाँ पे कितने तीन टर्म्स है तो पोलिनोमियल कितने डिग्री का मिलेगा? सेकंड डिग्री का. वहाँ पे 4 टर्म्स है, वहाँ पे पोलिनोमियल कितने डिग्री का मिलेगा? इट इज थर्ड डिग्री का. ओके, एंड दिस x में भी एनी अननोन टर्म्स वो भी रह सकता है हमारे पास, सो दैट वी हैव टू फाइंड आउट. अब उसके बाद ना फॉर्मूला वी राइट डाउन ड्रॉपिंग द a1, x माइनस a2, x माइनस a3 अपॉन व्हाट इज इट? a2 माइनस सॉरी a1 माइनस a2, a1 माइनस a3 विच इज रिटन हियर मल्टीप्लाइड टू f of a1. a2 को ड्रॉप करो, x माइनस a1, x माइनस a3 अपॉन a2 माइनस a1, a2 माइनस a3 इनटू f of a2 विच इज रिटन हियर. a3 ड्रॉप करो x माइनस a1, x माइनस a2 देन अपॉन
a3 minus a1, a3 minus a2. Into it is f of a3. So this is the third term we have written likewise. So this is the 3-point Lagrange's interpolation formula. So this we use to reduce that given data into the polynomial form, or to find out the missing terms, that is to find out the value of y. So it is especially used for the when x is not equispaced, बिकॉज अगर x इक्वी स्पेस होता है, इक्वी स्पेस मतलब अगर इक्वल इंटरवल पे x के वैल्यूज होते हैं तब हमारे पास न्यूटन्स के इंटरपोलेशन फॉर्मूले हैं, ओके. बट लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला हम कब यूज़ करते हैं, जब x नॉट इक्वी स्पेस्ड होता है, दैट टाइम वी यूज द लैग्रेंजेस interpolation formula. Is it okay? This is just a formula description, that is how to write down that formula of a Lagrange's interpolation formula for the x for the unequal intervals. Okay, thank you.